definitely the biodiversity as well. So that community forest in Nepal was started since 1970, and during from since that time until now, how that forest system is moving and what are the different constraints and what are the goods and bad experiences it has gained. So it will tell all about all these things. So let's begin from the biodiversity and ecosystem services first. Generally, in community forest, we can just see different levels of biodiversity. They are genetic biodiversity, so species biodiversity, and ecosystem biodiversity. So generally, biodiversity means biological diversity. So different species that might be plant, that might be animals, reptiles, mammals, different angiosperm, gymnosperm, and very small species as well. All they are under the biodiversity category. So they can be categorized into three different types: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. So genetic diversity definitely means the diversity in the races. As you can see in the picture, there is different races of the species that might be in different patterns genetically. Another diversity is species diversity. In the forest, means in the forest, we can find different type of species like deer, bear, tiger, and many other apes species, and even plants. So they are basically considered under species diversity. And what about the ecosystem diversity? Ecosystem diversity means it might be forest, river, pond, and even marine, cave. All these ecosystems are under ecosystem diversity. They bear different characteristics of biological form there. So from their diversity, we will have ecosystem. So there are different ecosystem services that from ecosystem, and from ecosystem we get different types of benefits. Those are considered under services. Which services, if we are just developing forest as a community forest, joint forest management, even national forest, they all bear these kinds of supports. What type of services we get from forest? So there are total provisioning services, regulating services, cultural services, and supporting services. If you say provisioning services, this means different types of consumable items that might be fruit, trees, for timber production, water, different types of medicinal and aromatic plants that will give you a different constituents, for example, phytoconstituents, and even raw materials, soil, water, and other things. So they are generally provisioning services, and regulating services means what it regulates. For example, nutrition management, and then even climate. It regulates carbohydrate by sequestration it, and different other systems inside it. For example, pollination. And another is cultural services we are getting from that one, means from forest. That is aesthetic value. For example, we feel different types of feelings when we just visit to the forest. This is aesthetic value, and we can do their meditation and sometimes recreational. For recreational purpose, we visit forest as well. They all belongs to the cultural services that forest is providing us. And supporting services means how that habitat is managing itself because of the ecosystem. And well, soil is forming because of that ecosystem. So all this comes under supporting services. Overall, that forest system provides us huge benefits which we cannot explain. And how we are getting those benefits into community forests, and during getting those benefits from forest, have we been able to conserve that biodiversity and the ecosystem and even ecosystem services nicely? This is the main topic of this
presentation. So that was just a brief explanation about biodiversity and ecosystem services. Let's move forward then. I already mentioned that when we are talking about forest, there are definitely lots of things what we might not be aware about. So if we are not aware about, then will we be able to manage that forest nicely? Definitely not. For example, how much amount of money you have in your wallet, that determines what you're gonna do. It will help you to plan properly, so that to plan properly, you should have appropriate information about forest system and what things are there that will allow you, that will help you to manage forest system very nicely. As I already mentioned about community forest, it was originated from the centralized forest system, and finally it converted into decentralized system as a community forest in Nepal. In the beginning of time, it was named as Panchayat forest, and after then, before that, there was lots of destruction when it was centralized, means when it was under the control of government. And then government later on realized that why not to provide certain part of forest land for the people so that they will be able to manage it nicely. So as a trial, they started forming community forest, and then that really helped to the people. Its main motto was to the people, for the people, and by the people. So the people who are involved in destructing forests, they were now starting managing all these forest system, because all those were now their own property. So all responsibility was there. So in that sense, when government decentralized it, community forest management system went viral, and then people also engaged themselves in its conservation and getting more benefits from it. Finally, of course, that helped very nicely, and now community forest in Nepal is considered as a very recognized worldwide. Now, the main concern, we just started community forest from decentralized to centralized system to decentralized system, and then all the people involved here now, were we in a right track, or did we get all the things that we need, or did we, means, were we able to maintain all that forest system nicely and get optimum benefits from there? So that was the main concern. And after that, what we decided is we tried to contemplate in community forest systems whether biodiversity and ecosystem services are properly managed or not. So it was approximately 2 years of experiments. From there, we could be able to publish this paper. And this is the paper you can find in the website. This is integrating biodiversity conservation and ecosystem services into operational plan of community forests in Nepal. It's status and gap. Our main purpose was identifying what is the status of community forest at the moment and what are the gap there. So this paper discusses about this. So overall, to get all these status and gap information, we conducted different level of regional workshops. There were total 5 regional workshops around the Nepal, and then also reviewing the operational plan that community forests management users are taking into consideration, and because of that, they manage their forest. Overall, we collected approximately 100 operational plans from the different part of the Nepal, and then this was randomly. And what we did, another thing was developments of indicator to understand what is the status and gap and application of BESCI, and even national consultation workshop was conducted so that we can engage ourselves with different stakeholders and identify what are the status and what is the present scenario and what are the threats.
After doing all these things, it took around 2 years for us to identify this status and gap. And what we understood from that study was there was still lots of problems regarding community forest management. And then what are they? Let me explain about them. First problem was duplication problem of the operational plans. Means there are approximately now more than 22,000 community forests across the Nepal. And many operational plan we found duplicating problem. Means the forest officials and technicians who work in this field, they are really reluctant to work in nice way, in dedicated way. They always, most of the time, copied and paste. That is the present very bad scenario in community forest. And even many of the plant species which are in one community forest that does not incorporate properly because it was duplication. Another was formal mention of biodiversity and ecosystem. That operational plan, which is the Bible, which is the many important book for that community forest, uh, even in that book, there was not anything about biodiversity and ecosystem. Even that term was not mentioned while we analyzed 100 different community forest operational plans. And another thing was those operational plans were basically concentrated in commercial species rather than all, all the biodiversity. For example, there is Soya robusta, for example, some pine plant which are commercially important. Only those plant species were taken into consideration while just making that operational plan. And another problem we got was shrinkage of the biodiversity corridor and impact of invasive and alien species, and even lack of that genetic level diversity assessment and limitation coverage of critical ecosystem services. Impact of introduced species was also the main problem there. Overall, these problems helped us to understand what is the status and what is the gap at the moment in community forest. And after then, what is the entry point to incorporate all these things so that those gaps and those problems can be solved? And we realized systematic methodology and action plan should be introduced there into the operational plan so that people will develop, people will apply their in their own community forests to maintain biodiversity, ecosystem services, and their sustainable development for their own livelihood benefits. So for that, we started contemplating about how and what things should be included into their operational plan. At that time, we conducted national conference where most of the stakeholders, approximately 700 stakeholders were there, all the scholars and academicians and even user groups. And we also conducted regional workshops in different parts of Nepal. Approximately 7 workshops we did during that time. And from there, finally, we figured out that appropriate uh, method, appropriate procedure that should be done. And whenever we did that one, we prepared that into the format and then applied properly. Just for pilot study. During that pilot study, we collected approximately there were 18 community forests from the different part. As you can see there, the green color points are community forests that were selected randomly from the different parts. And we applied those procedures there to integrate biodiversity and ecosystem services.
Those formats which we applied during that time, there were total 5 formats, and those formats we used during the community forestry management system. We conducted different level of meeting with user groups in each and every community forests to collect those information so that biodiversity related issues, ecosystem services related issues can be integrated nicely. What we did was, in each community forest, we started giving them education in the first day about biodiversity and ecosystem services. And then after making them aware about all the biodiversity and ecosystem services, we started asking them what is biodiversity, asking them to list the different species their existence in their community forest. When we were looking those 100 community forests before, during that understanding gaps and status, at that time there were very few species mentioning in their operational plans, maybe 5, 10 hops of, there were no hog and shrubs, there were few trees species, not all. There were no climber, few mammals species and bird species. That's it. They didn't even include all the species they are really there in their community forest. So this time, what we did is we tried to find species richness in their forest through the participatory method. So we asked them to list all the species under herb and shrub categories, trees categories, climber categories, and under fauna. There were mammals, birds, reptiles, insects, and even water animals. We listed all those species in a long way. So there were many species now we could be able to collect, and we could understand those species there in their community forest. They were also not aware about that. For example, few people know few species and other people know other species. When we collected that information, then they also got shocked. Oh, we never knew that much species are in our community forest. So this was really good starting point for us to incorporate that operation, that biodiversity and ecosystem services thing in operational plan. After collecting all this information, our main concern was to understand the status, challenges, strain, pressure, and what type of management they actually need. We started thinking about one by one. There were many species. For example, in one community forest overall, including all flora and fauna, there were 600 to 700 species. We started discussing about all of them and their status, trend. They are increasing, decreasing, or they are stable. What type of pressure threats there because of that species or to that species, and what can be done to get rid of that pressure and threats. We started contemplating all these things and make a list. We made a list of that thing. This was the second format to understand status, challenges, trend, pressure, and needed management action. And then this was related to species. Now, in another format, we started talking with them about the ecosystem services, the benefit they have been getting from. So, for example, there were many ecosystem services. For example, water, fuel wood, fodder, and even some medicinal plants, fruits, and many other important non-timber forest products. We started asking them about all these things. There were different kinds of people. Some people liked water too much. Some people liked fuel too much. Based on their requirement, based on their desire, their answer was also different. So we categorized them as well to understand how important it is in fact. So dependency, we started thinking about that, made a list,
and what is the current condition, and then trend, increasing, decreasing, or stable. What is the scenario? We collected that information as well. And later on, what is the pressure that services is getting from human being, or if there is some pressure or threats, what is the measurement we can apply? What is the management action we can apply? We collected all this information through the participative way by asking them. They really gave us lots of information about all these things, even management system. And then after identifying that management practices, we made a we prepared an action plan, how those management plan can be incorporated into community forest. So there were lots of management plan we noticed and gathered during participatory during that participatory conversation, and we made a list, and every services and every species that are there and getting pressure, those management systems were included under action plan, and the uh, how we gonna do that, when we gonna do that, the responsibility of particular person or organization or maybe government, forest sector, to whom we should coordinate and how to follow up them. All these things were mentioned inside that action plan. So it was a really good thing and good experience for us to do. And after then, they started doing all those activities there to get rid of all the threats and pressure. And after 2 years, for example, uh, we started doing monitoring as well. In under that monitoring, we again participate all those user groups and ask the questions about all those measurements and what is the outputs they have got and what was the change there they have gained, and then what type of impact it was there, whether that helped or not. If that didn't help, then making another way to just get rid of that plan. All these things were done during the monitoring system. So overall, it took approximately 5 years for us to complete all these things from beginning to the piloting and monitoring process. And after doing all these things, we realized that it's really a good idea, and we can now apply all those procedures into operational plan, and then even we can teach to the forest officer, user groups, and many stakeholders who are involved in managing community forest. During that time, we developed training manual, and then using that training manual was for 5 days training. So these are the content inside the training manual to train people, to train stockholders, to train all those users group and forest officials. Overall, doing all these things helped us to manage community forest and integrating biodiversity and ecosystem services there perfectly. Now, the process of uh, putting them inside the guideline is going on. I think it will take approximately 1 to 2 years more to do all these things. So after then, it will also be incorporated into guideline, and then all the people all over the Nepal will use this thing to incorporate biodiversity and ecosystem services in their forest system. So overall, this was the story I was interested to share with you. Hope definitely it helped a little bit, and thank you. Thank you so much, sir.
Uh, Professor Prabhat Rai, can I ask one question? Yeah, sure. Yes, sir. Myself, Professor Amrit Pal Kaur from Punjab University, Chandigarh. I want to something, sir. You have studies on the Nepal city. How can biodiversity conservation and ecosystem services be effectively integrated into the operational plan of the community forests in the special state of the Nepal as a case study? Sir, any other similar community management forest systems in other developing countries also? That's really a good question. Actually, this is the story I just to explain. Here are still Yes, sir. more community forest management system is not only the participatory management system method. There are joint forest management system. Another is religious forest management system and collaborative forest management system. There is another forest management system, which is buffer zone community forest management system. This is near the national park. So all these are participatory method. That method which we applied during community forest uh, investigation and experiments that can also be applied in other type of forest management system that are really participatory management system, means community-based management system. Um, there are many such type of community-based management system across the world now. For example, even in India, we can see community forest management system, I think, and another is there joint forest management system is also there, I think. And now community forest management system in Nepal has been a good story. And now this has been under the replication process by other countries as well. For example, Indonesia is replicating this management system. Even many African many countries in the African continents are also incorporating, means they are also uh, using this method because this is ultimately decentralized method and it has been able to uh, stop the destruction of forest. And now people are really interested across the world and use that method. So I think I could be able to answer your question. Yes, sir. Yes, thank you so much, sir. I need to see listen the name of India कि इंडिया में कहीं ये प्रैक्टिस हो रही है या नहीं. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank Okay.
Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay. Thank you for the nice introduction. And first of all, I would like to thank all the organizing committee, principal sir, and most importantly, Dr. Naresh Kumar Sandhu, and all the students and all the listeners. So I'm working in Mexico in UNAM. UNAM is in QS ranking is in top 100. So basically, I have done all my educations from India. And this is my university at this place. If I can show you. So I'm from, means I'm working here, Ensenada. Is very near to US, United States, a border of United States from here. And this is my just little about my journey of educations. Bachelor of Science from HP University, Simla. Master of Science from Berkeley University, Bhopal with Professor Dr. Sandhu. He was my colleague. Then I done Master of Technology from JIT Noida, then PhD. So in Ensenada in Mexico, I have this lab. So basically we are working on multi-ferroic materials, bulk, nano and thin films for device applications. So we have different labs. This lab dedicated only for synthesis, nanomaterials, and this lab is dedicated to thin film. So we have different techniques: PLD, pulse laser deposition, sputtering, thermal evaporation, and this lab for measurement, characterization. So in my lab, we have ferroelectric measurement, magnetoelectric coupling measurement, like this. This is in situ ellipsometry to check the thickness of the thin film. So in my department name is Advanced Material, and we have a different groups, group of ferroelectric and group of photocatalysis. So these are the investigators, means researchers. We have 8 researchers in this group, 4 in this group, and some technician. So in my lab, you can develop thin film by pulse laser deposition and by sputtering. So, and also by atomic layer deposition. So this is just result from my student. But today, just I need to talk just basics of multiferroic. So basically, my group, we are dedicated to 4 lines, 4 research lines: multiferroic materials,
and high energy storage materials, and semiconductor and multifabric based high entropy materials. So nowadays, this field, high entropy materials, is very focused and growing field. And also, my group is working or doing some simulation using SCAPS for perovskite solar cell in order to optimizing that how much we need thickness of absorber, HTL, whole transport layer, ETL, means how much thickness and what kind of materials we can join to improve the efficiency of solar cell. So basically 4 lines we are working and my students. And this high energy storage materials, basically relaxer and basically relaxer based materials. So if you see, if I give you just basic understanding to students, so in conventional ferroelectric, we have this kind of hysteresis curve. So in any way, we need to reduce this conventional ferroelectric loop to this shape. So in order to enhance the uh, storage capacity of your relaxer materials. So what we are doing, we are just introducing non-polar regions. So maybe this time students cannot get, but only you can imagine from this conventional hysteresis loop, we need to go to this, like slim, or it's like super paramagnetic things. So in my university, UNAM, as I said, is in QS ranking is in top 100, and we have a free program for PhD and masters. Postgraduate in Scientia in Engineering means PhD in engineering materials and PhD in physics science and mastery in nanoscience. So this fellowship is very good, is fixed by 4 years, means in 4 years we need to, or you need to finish your PhD. So we in this kind of funding, we have a separate money for your conference participation, chemical, and for your living things. So I think it is very good fellowship. So maybe if some student interested, they can contact me or other, maybe Dr. Sandhu. So presently I am working on these projects: fabrication and physical properties of multi-phase heterostructure, experimental and DFT view of electric field control of magnetism. This is very important, that how we can control magnetism by electric field to go towards spin running devices. Then experimental view and DFT, this is different heterostructure, is LSMO and is metal, rhodium, iron alloy. So basically in these two structures, we are trying to control magnetism using electric field. Because if you control magnetism by magnetic field, it needs more energy. So means now we need devices, new next generation devices based on low power consumption. So if we can control magnetic spin by electric field, so we can go towards spin running devices. So some students, they are working on zinc oxide by DFT and transition, because in zinc oxide, magnetism is a controversial thing. So they are trying to justify by DFT that what is the main mechanism for magnetism. And synthesis of physical properties of high energy storage materials has been discussed. And multi-frag based high entropy materials. Since for multi-frag materials, I think it started from 1950, but the main boost was around 2000. But still is a hot topic. We will explain why. So why multi-frag? The first term is magneto-electric coupling. As the name suggests, coupling means cross coupling between ferroelectric and magnetic ordering. Means if you change electric field, you can change or you can vary magnetic parameters, or in other vice versa,
you can apply magnetic field, you can change electric parameters. For example, you can apply magnetic field in your material. So by applying magnetic field, you can change electric polarization. So if you have this kind of material, you can control both electric and magnetic parameters by one parameter or one electric, either electric field or magnetic field. So data storage and spintronics, as the name suggests, if you have a multi-ferroic materials, multi-ferroic means whenever your material has more than 2 ferroic orders. So definitely if you have 2 ferroic orders, you have multi-state memory devices. In detail, I will explain just in a few minutes. Energy efficient, as I told you, once you control magnetic parameters or magnetic spins by electric field, we can go towards spintronic devices. Enhanced functionalities and sensors and actuators. Once you have electric and magnetic control, you can make sensors that you can detect both electric and magnetic fields. Potential for tunable devices, multifunctionality in thin film and heterostructure, and improved device miniaturization. So these are the basic outlines that I'm going to talk about this. So for the master student or maybe bachelor student, the first question is, what is ferroelectric? Ferroelectricity means how you can define. So maybe I guess all the master student familiar with this. This is a hysteresis curve. So basically we start from point A to B to C to D. So this is your material, virgin materials. So once you start applying electric field, so from A to B is just reversible, means you can reverse. But once you reach point D, it means at point D, when you start decreasing electric field, this material didn't follow the same path like D to A. It starts like this path. So this is very important in ferroelectric. It means, for example, you have a 10 domains in your material just for simplicity. However, there are many atoms and many dipole moments. So for example, 10. So once you reach from D to this P, PR, so maybe out of 10, maybe 6 still in the same direction in the electric field. So it means you have at 0 electric field, still you have some remnant polarization. So that's why the name is remnant polarization. So even if electric field is 0, you have a remnant, some remnants. And this is saturation, PS, saturation polarization. So if any material showing this hysteresis curve in electric field, so your material is basically ferroelectric material. So the condition is your material must have some spontaneous dipole moment, right? Permanent dipole moment you should have in your material. And the most important, D0ness. Outer d orbital must be 0 electrons. So these two conditions must satisfy your materials. And very interestingly, I know you all know piezoelectric, pyroelectric, ferroelectric. So if this ferroelectric polarization you can twin with pressure, then material is piezoelectric, right? In the market, we have many piezoelectric sensors. So you can either press or apply electric field, you can change the positive and negative arrangement. And if by temperature you can change this ferroelectric polarization, is pyroelectric. So pyroelectric sensor has many applications, in many fields. So this is the basic of ferroelectric. Means what is ferroelectric? Any material which showing this hysteresis curve. In the same line, they are analogous to each other. So instead of electric field, now we have a magnetic field. The same curve, like from point A to B to this. So this is saturation. It means at this point, all the magnetic spins are aligned in one direction, right? And at this point, maybe some out of 10, maybe 8 or 9 or maybe 6. So even in the 0 magnetic field, you have some magnetization. So now in this case, we have just
This condition is just reverse from the last. In this, we could have no electron, but definitely if you know how the magnetic Bohr magnetron comes into the picture, so in your material you must have some unpaired electron. Only that they contribute for magnetic or magnetism. So definitely we need some unpaired electrons and spontaneous magnetic moment. So if all the electrons are paired, so all the Bohr magnetron going to cancel each other. So the net magnetization is 0. So in the same line, we can define this. So now, if I just tell you, just keep these two. So one material is ferroelectric and one is ferromagnetic. So now the main term that we are working, my main research field is multiferroic. So as I told you, this journey starts late 1950, but the boost is around 1994 or 2000. But in 1994, this Schmidt, he gave the proper definition for multiferroic. That what is multiferroic? So as we discussed, any material which showing more than 2 ferroic order is called multiferroic. These materials has cross coupling, as we told. You can apply stress, you can have a change in polarization, electric polarization. Using biomagnetic field, you have changed some electric polarization and vice versa. So in this material, this triangle is very important. Magnetoelectricity. As I told you, if we need next generation devices like low consumption power or spintronic devices. So we need this term is very important. Magnetoelectricity means magnetoelectric coupling, right? As we discussed, by changing one parameter, you can change other. So the main problem to control the spin is magnetic field, because to produce magnetic field, you need a big solenoids or electromagnet, and that consumes more energy, right? So if we are able to control magnetization by electric field, so is low power consumption devices. So basically, if you you can see this Venn diagram. So broadly, we have two types of material: magnetically polarizable and electrically polarizable. So out of this, we have some ferromagnetic, ferroelectric, and very few multiferroic. And out of multiferroic, we have very few magnetoelectric. So as the name suggests, magnetoelectric, by changing one parameter, you can control other. So this term for spin-only devices is very important, that you can control spin, magnetic spin or electric parameter, electric polarization by other parameter or other field. So this is just how the journey started from multiferroic. Started from Longton 1888. A moving charge become magnetized, then followed by P query, P Debye, Wisniewski, theoretically defined magnetoelectric effect in chromium oxide, then Astrov experimentally, then proper definition given by the scientist in 1994. So as the name suggests, for ferroelectric and ferromagnetic, the condition to must have the conditions to have ferroelectric and ferromagnetic is just opposite. If we see the first condition, material must have insulator, right? All the dielectric and ferroelectric, definitely they have insulator, because we are sustaining the charges, not conducting the charges, right? So we need material must be insulator for going to dielectric. But in case of ferromagnetism, material must be conductor, and centrosymmetric, non-centrosymmetric. And D0ness means outermost d orbital should be empty. In this case, definitely we need some unpaired electrons. So still we have these contradictory conditions. So for that reason, we have a very few multiferroic materials. So still for researchers, we have a scope to design a new multiferroic materials. And the most commonly multiferroic material is bismuth ferrite, this.
In my lab, we are only focusing on this. And the reason is, I will tell you, but there are many multifluidic. And the names just like charge ordering, geometrical distortions, the name suggests the reason for polarization. So in this material, the reason for polarization is charge altering. In this material, geometrical distortion and type 2 multifluidic spiral magnet, collinear magnets. But in BFO is single phase, these are single phase multifluidic. So I guess you know what is single phase and composite, right? Single phase means you have a only one type of material. If BFO, so we have only in XRD we have only peaks corresponding to BFO crystal structure. For example, BFO is distorted rhombohedral. So all the peaks corresponds to bismuth ferrite. There is no peak like iron oxide, bismuth oxide, right? So this is the difference between single phase and composite. In composite, you should have bismuth oxide peak, iron oxide peak, and some bismuth iron oxide. So now the question is why BFO? If you see in the table, we have many multifluidic materials. So I am listing here TC and TN. TC is transition from paraelectric to ferroelectric, and TN is transition from anti-ferro to paramagnetic. So if you see all the materials, either TC or TN, they are well below the room temperature. So only bismuth ferrite is TC and TN is room temperature multiferroic. Got it? So for that reason, most study centered on BFO, but it doesn't mean that other materials have no applications. Sometimes we need applications below room temperature. So for that reason, these materials is more important. So bismuth ferrite is rhomboidal structure, distorted rhomboidal structure, and is antiferromagnetic. Is not ferromagnetic, is antiferro. Means if you see in one subcell, is the spin is up, in the next adjacent or neighbor is the spin is down. So the overall magnetization is going to cancel out. So in this case, the ferromagnetic is 0. We have antiferromagnetic. But this antiferromagnetic arrangement is is like in one length 62 nanometer. So spins like this. For the just to simplicity, they are showing like this, but the actual picture is this. It starts like this and then this. So by doping or by any other means, if you destroy this length 62 nanometer, then your material must have some ferromagnetic and the overall material is ferromagnetic. So mainly by doping, by changing crystal structure, basically we are destroying this 62 nanometer length. And the polarization comes from this lone pair of bismuth. This lone pair is going to hybridize with oxygen orbitals, and then in resultant you have some dipole moment between bismuth lone pair and oxygen. So you know, means in ferroelectric, to have ferroelectric, you must have permanent electric dipole moment. So by hybridization between bismuth lone pair and oxygen, you must have some distance between bismuth positive and oxygen negative. So as the name suggests, multiferroic means you have two ferroic order or more than two ferroic. So there are many applications. Some like for ferroelectric, ferromagnetic. So you can make electrically enabled microwave devices, TMR sensor, multiple state memory devices, spintronic spin ball, photocatalyst, multifray for thermal energy, harvesting. There are many applications. So just a few applications. So in this time in market, we have some multi-fluidic random access memories. So in conventional memory, you have only two options. If any student interested in electronics, they know how to
save the data, right? So you can save either 0 or 1. So you either because thermodynamically this state or this state is very stable. So either you store 0 here or 1 here. In the same way ferroelectric, either you store here or here because they are very stable thermodynamically. So if your material is only multipheric, only magnetic, so you have only two options, right? Either you store in up or down. But once you are dealing with multipheric materials, now you have four state to store your data. So now density wise, now you can increase the storage power. Another is most important application for solar cell. So in a solar cell, we have many solar cell based on silicon. So the problem in silicon based solar cell, you cannot generate voltage more than 1 volt because of band gap, right? Because the separation of charges only in this place, depletion region. But once you have ferroelectric or multipheric materials, so in this case, we have a bulk photovoltaic response. Because in ferroelectric, you have a dipole moment. So due to dipole moment, you have an inbuilt electric field. So that inbuilt electric field, you can separate your electron and hole, and even you can, not even, but definitely with the electric field, you can also generate. But once you shine the light on your ferroelectric material, they can generate electron and holes. And this inbuilt electric field throughout the materials, not in the depletion region, but throughout the material, this electric field transfer or separate hole and electrons for the electric current. So this is very good applications for multipheric materials or ferroelectric materials. The another applications that you can see in your home, that you have a refrigerator. So presently all the refrigerator, the cooling process is by chemical reactions, right? But multi-ferroic or multicaloric materials, you can cool your things in the refrigerator by this process. And you can imagine there is no chemical process involved. Only you can utilize the property of multiferric materials, that's dipole moment and spin. This oval is dipole moment, electric dipole moment, and this arrow is spin. So by applying electric field and magnetic field in the cycle thermodynamically, you can arrange and rearrange, and in the final step, you have the things cool down without any chemical reactions. There is no chemical involved in this process. So this is very good application for multi-curing materials, that you can cool down the things without any chemicals. So from A to B, B to C, and C to D, right? So this is very good applications. So I'm going to just discuss of my one master student. She has made thin film by sputtering. So in material science, the first step is to check whether your material is single phase, or what you expect in the synthesis, whether it is the desired phase or no. So the first step is always in material science, X-ray diffraction. So they made target in 2-inch. Maybe if I have slide, I will show you, but maybe no. So basically, we need to make 2-inch target. Then this target we need to put in sputtering, and then we make plasma, and then these plasma argon atoms. Or let me see if I show you this. So this, whatever material you need to deposit, we need to make this 2-inch of target. And this is chamber, this sputtering chamber, this is plasma. So in the down place, they have this target. And then by applying RF power, you can make plasma, and these argon atoms striking means making collision with your material, and they are ejecting atoms from this material. For example, this is LSMO, and then they are going to deposit on this side. This is heater,
And in the heater, we have a stick, the substrate. So in this case, the substrate is silicon. So this is how looks the RF magnetron sputtering and how the plasma process starts. So we are here that we are discussing about the properties X-ray diffraction. So this is XRD from the target. So we have a rhomboidal distorted structure. Then we feed it with reticle just to extract the lattice parameter. And I guess all the master students, they must know about these numbers, right? Miller indices. So 0, 1, 2 means the electron density or atoms in by z directions, x, z, right? So these are planes. The number means how you can represent the planes. And basically this number represents electron density in that particular direction. Then my students he has carried out this whole device, silicon, then SRO. SRO is basically conducting electrode, and then the thin film of the lanthanum and gadolinium doped BFO. And in this case, we vary the thickness of BFO. So like 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and 30 minutes. So basically this time is that plasma means I switch on plasma for 15 minutes, 20 minutes, or 25 or 30 minutes. So it means 15 minutes means that your organ atoms making collision with your target for 15 minutes. So more is the time, more is the thickness. So then from SAM, scanning electron microscope, we just check the interface, that how means approximately what is the thickness. If you need very precisely, we need to go for TAM or ellipsometry. In SAM, just approximately you can check out the thickness. So you can see the very clearly different contrast. So SRO, this is SRO, BFO, and top is ITO. So maybe the student question how you can define. So from elemental analysis or from ADS, you can confirm this is SRO, this is BFO, and this is ITO. ITO is top electrode for solar cell, so that maximum power you can absorb by this material and going for absorber material. In this case, absorber is BFO, multi-phoic material. So another technique is AFM. AFM is basically to check out morphology, means how smooth is your thin film, or you have some zigzag. And another role of AFM is PFM, I will discuss. So in this case, we just scan topography, right? So you can check the roughness, 9.97, 8.23, 6.70, 10, 1.69 for 10 minutes. So means how is the roughness means, right? So more is the thickness, it means more is the roughness. If you see for 30 minutes, 9.97. And this is very interesting for new master student. If you see this, the bright region and the light region, right? So these regions define you the direction of dipole moment. So in this region, the dipole moment in one direction, and in this region, the bright is another direction. So in BFO, we have a two kind of dipole moment. So one spin is this and one is just opposite. It means we have 180 domains and sometimes 90 degrees. So to check in your material whether you have 180 domains, you can perform this PFM, piezo force microscopy. So basically you are polling the materials and then you are checking, making this measurement. So if your material is non-ferroelectric, so you are not supposed to see this, right? Only if your material is ferroelectric. And this is for phase and amplitude. So if your material is piezoelectric or ferroelectric, only then we can expect this kind of curve, hysteresis curve, strain curve.
So we have checked for thin films, this kind of, to double confirm that we have ferroelectric and piezoelectric response. So from this process also you can calculate piezoelectric coefficient. And then by using UV visible measurement, ultraviolet visible measurement, you can calculate your band gap, because in optics or solar cell, the band gap is very important, right? Because once your band gap is in visible region, you can utilize the sun energy in most efficient way. So you can, by using top plot, so we have a different band gap with different thickness. So you can imagine the material is same, but thickness plays important role to change the optical or overall physical properties. So in conclusion, we grown successfully BLF, OSR, OSS heterostructure, and then from X-ray diffraction we characterize the crystal structure. From scanning electron microscopy we just the surface morphology and thickness, and from PFM we have confirmed which kind of domains and piezoelectric and ferroelectric response. And from PFM even we can check the grain size, and from optical measurement UV visible you can check out the indirect or direct band gap transitions. So I think we have some time. In one of he is my PhD student, and we have observed a novel phenomena electroluminescence in this heterostructure. So we have a device silicon, then SRO, then LSMO. So as the name suggests, electroluminescence, right? There are one term photoluminescence. This is the paper that we have published. So any kind of luminescence, they are depend on this kind of, based on these transitions. So either your material have direct band gap. So direct band gap means the top and the bottom of valence and conduction band in the same energy level, right? And this is indirect. So for any kind of luminescence, always we need direct band gap material, because in this process you are losing some energy or some light, or maybe in resultant some heat. So as we're discussing the electroluminescence, once you apply electric field, your material is going to shine or emit some light. And these are many applications: light emitting diodes, organic light emitting diodes, LCD, solid state lightning optical sensors. So for this, as we discussed, my student follow from this, make which target, then thin film. These are the thin films, right? And then for next film, BFO, and then finally she has this structure. And then depending on the thickness or of each layer, she has made many layers with SRO, BTO, LSMO, and we have published many work from these devices. So in this case, we're just talking about only one, that is LSMO, SRO, and SI silicon. So as I discussed, the first step is XRD. So we have checked out with X-ray diffraction, then scanning electron microscope for morphology or even for thickness. Then we have carried out Raman analysis. Raman analysis is just for complementary for structural changes, means to double confirm to crystal structure or crystal changes. So we conclude that coexistence of competing rhombohedral and orthorhombic crystal structure for LSMO and orthorhombic for SRO. And then we have carried out XPS, X-ray photoelectron spectroscopy, in order to just confirm that your material is in desired oxidation state. So whenever you need to check oxidation states, so we need to carry out X-ray photoelectron spectroscopy. So you can check that ruthenium, manganese, strontium,
they are in exact oxidation state or no. So in this case, Mn3, we have a composition mixture of Mn3, Mn2, 4 plus, and also some Mn2 positive. If we see some peaks from corresponds to 2 positive. So basically, this analysis or measurement is just focus to check sometime elemental not mapping contribution uh, contribution or volume elemental analysis and oxidation state. Then we have carried out photoluminescence, just be excite LSMO with some wavelength, and then we have a contribution from visible, this blue and this color, this and red color, and same for SRO. And we conclude that this response basically can be ascribed or attributed to the structural modification of SRO and stoichiometric estimation on the surface and comparison with the volume in X-base analysis. So this is the main core of the paper, that electroluminescence. So we put this material in, we apply some electric field like 40 volt, 60 volt. So if you see at 60 volt, we have some more illumination, right? Means we have a more light. So basically we are applying electric field, and that electric field pushing the charges to go to valence band, and then from valence band they are making excitation and releasing the light, and this is called electroluminescence. So if you see this, we have a more contribution from red light at 60 volt. So from this study from my student, we conclude that 60 volt, if we apply electric field, we have a more emission from red component. This is just complementary measurement to check which kind of conduction mechanism that you have in your thin film. So we have a different conduction mechanism, right? Space charge, limiting conduction, and Ohm's law. So all we can conclude by some numbers. You need to perform some fitting, and from that fitting you have some numbers. Based on that numbers, you can classify, oh yes, I have this kind of conduction mechanism in film or in bulk. Even in bulk, you can tell. But the main part is just electroluminescence. So these are the different transitions for Mn2 positive. And the main contribution for electroluminescence is from this. So the next, another question is, because LSMO is magnetic and BFO is also magnetic. So can the magnetic field change electroluminescence? This question is for just master students. I'm going to give you a hint. Electroluminescence is just rearrangement of electrons in your materials, right? So you're applying electric field. So if you're applying electric field, so that electric field is pushing the electrons into valence band. So in anyhow, if magnetic field is changing that distribution of electrons, so what do you expect? The magnetic field can change the electron luminescence response, yes or no? So this is just question for student, and already we have some magnetic electroluminescence. As the name suggests, by applying magnetic field, you can change the response of electroluminescence. The conclusion, like successfully we make a device, then carried out with X-ray, XPS, SAM. This is not very important. That for master student, you must know what is the meaning and what is the purpose for X-ray diffraction, scanning, electron microscope, XPS. So once involved in the process, so these are the easy steps and easy analysis. Maybe at this time you are feeling it's difficult, but it's no difficult at all. Once you in the process, you can easily understand and you can do easily.
So I think that's all from my side, and I would like to thanks to my students and that my project and my collaborators, different spreading about the world, Chile, India, and Mexico and USA. And also I would like to acknowledge my project, ownership by researchers for Mexico through project this. So now I would like to receive some questions, some yes. Thank you for all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias.
डॉक्टर साहब धन्यवाद। बढ़िया रही। यस सर। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज के माननीय अतिथिगण जितने भी महानुभाव मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका और गवर्नमेंट कॉलेज भोरेंज के आदरणीय प्रिंसिपल साहब का, शिक्षकगण, जितने भी कॉन्फ्रेंस के टीम मेंबर्स हैं, कॉन्फ्रेंस की टीम है, डियर स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज जो मुझे विषय बोलने के लिए मिला हुआ है क्योंकि मैंने इससे पहले 2 इंटरनेशनल स्कॉलर्स को सुना, तो मुझे जो भी आपका टॉपिक है उस पे बोलने का जो मुझे मौका मिला हुआ है, मैं ज़रूर उसका फ़ायदा उठाऊँगी क्योंकि पिछले जो टॉपिक्स मैंने सुने वो मुझे ऐसे लगा लिटरली साइंस रिलेटेड हैं। तो मैं जो टॉपिक है, जो भी कॉन्फ्रेंस का थीम था, मैं उसी पे ही अपने विचार रखूँगी, जिसमें है और जिसमें लिखा हुआ है कि रेज़िलिएंट वुमेन, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलने का मतलब ये है कि शीर्षक और संघर्षशील महिलाएँ, नवाचारी समाधान और सतत पर्यावरण। तो आज हम जितना भी ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना है, जिसमें मुझे बहुत से युवा भी यहाँ पे दिख रहे हैं बैठे हुए, हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के टॉपिक्स पे हमें एक छत के नीचे ज़रूर इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग जो हैं चर्चा करें। तो वंस अगेन सैल्यूट टू टीम जो भी हमारी इस कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, उनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम थोड़ा-सा विषय पर आते हैं। जो ये 3 बातों का बार-बार उल्लेख हो रहा है, रेज़िलिएंट वुमेन, मतलब ये एक ऐसी क्रांति है जिसमें एक चीज़ नहीं है। इसमें महिलाओं की शक्ति की क्रांति की बात भी हो रही है, विचारों की क्रांति की बात भी हो रही है और साथ में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब विचारों के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण की भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि महिलाएं जो हैं ये एक गांव, घर, परिवार ही नहीं परंतु हमारे समाज की जो रीढ़ भी हैं और इन चीजों को लेकर लेने देखा जाए तो हमारा इतिहास गवाह है कि जहां-जहां कठिन परिस्थितियां आई हैं हमारे देश को, हमारे समाज को, वहां पे उन्होंने एक साहस दिखाया है, अपना दृढ़ संकल्प दिखाया है और अपना साहस भी दिखाया है। यही कारण है कि हम लोग महिलाओं को एक परिवार तक ही नहीं माने और ना ही मानते हैं, परंतु कोई भी हमारा कोई भी चाहे वो
पॉलिटिकली बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, साइंस की बात हो, इवन एग्रीकल्चर की बात हो, यहाँ तक देखा जाए तो एनवायरनमेंट की बात हो, वो हर क्षेत्र में जो है वो अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो देखा जाए तो जो रेजिलिएंट वर्ड है ना, उसी शब्द से ही लग रहा है कि जो टूटती नहीं है, जो हार नहीं मानती हैं और हर परिस्थिति में अपने आप को खुद गिरती हैं, फिर अपने आप को सँभालती हैं, फिर अपने आप को फिर से खड़ा कर लेती हैं। और इन चीज़ों के लिए अगर हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देखें और अपने इतिहास के पन्नों पे नज़र डालें, क्योंकि जब हम कभी हमने भी ऐसे लेक्चर सुने हैं, तब भी हम लोग देखते थे कि सबसे पहला एग्ज़ाम्पल जो आता था, वो हमेशा रानी लक्ष्मीबाई जी का ही आता था। तो जब हम इस रानी लक्ष्मीबाई जी का जो आज़ादी के लिए जो उनका न्योछावर था, प्राण न्योछावर था, वो कैसे था, किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण जो न्योछावर किए थे, वो सब हम लोग कई बार टीवी में भी देखते हैं और कई बार हम लोग किताबों में भी पढ़ते हैं, तो वो हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ठीक इसी तरह से रानी दुर्गावती जी की बात की जाए, तो उनकी वीरता की बात जो है, वो हमारा एक अद्भुत उदाहरण रहता है। उनके नेतृत्व की बात जो कभी भी आती है, तो हम रानी दुर्गावती जी को कभी नहीं भूल पाते हैं। सेम इसी तरह से मीरा लक्ष्मीबाई जी हैं। अगर सामाजिक बंधनों को तोड़कर किसी ने भक्ति और आत्मविश्वास को दिखाया है, तो वो है मीरा भाई जी। इसी के साथ-साथ हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, जो कि प्रधानमंत्री रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे पूरे विश्व में भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया था। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जिनके साथ-साथ महिलाओं को हम जब भी पढ़ते हैं, तो हमने ये देखा है और ये सिद्ध भी हुआ है कि महिलाएं केवल सहन करने के लिए ही नहीं, परंतु उनका जो नेतृत्व है, उन्होंने एक नया इतिहास रचा हुआ है। अगर आज की महिलाओं की बात की जाए, तो अगर आज की महिलाओं को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो घर ही संभालती हैं, वो घर भी संभालती हैं, करियर भी बनाती हैं और समाज में भी सुधार लाती हैं। जब एक गांव में एक घर जो है, एक परिवार जो है, उसमें महिलाओं का रोल अच्छा रहता है, तो वो पूरे एक गांव की जो है वो शान बन जाती हैं। और जब गांव की शान बनती हैं, तो फिर समाज नेचुरली जो है ना, आधा पार्ट है महिलाओं का, तो फिर समाज में भी सुधार आता है। तो देश की बराबरी में अगर इक्वलिटी देखी जाए, तो वो पूरी अपनी प्रॉपर भागीदारी जो है निभाती हैं। हर महिला जो है, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, चाहे साइंस की बात कर लो। अगर विज्ञान के क्षेत्र में हम कल्पना चावला जी को देखें, या फिर ये भी देखें कि चंद्रयान मिशन में काम करने वाली भी हमारी महिलाएं ही हैं, ऐसी वैज्ञानिक भी हैं। और इसी तरह से डॉक्टरेट चिकित्सिका की बात की जाए, तो इसमें भी महिलाएं डॉक्टर बनकर बीमारियों का इलाज नहीं कर रही हैं। इसके साथ-साथ जो है वो बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी। इसके साथ-साथ जो है वो समाज को एक स्वस्थ बनाने की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इंजीनियरिंग की बात देखी जाए, तो इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, मैं खुद एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, तो चाहे चाहे मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग भी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स करते हैं। क कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाओं को मौका मिले, तो चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, डॉक्टरेट की बात हो, या चिकित्सा की बात हो, या फिर साइंस की बात हो, हर चाहे आईएएस की बात हो, आईएएस बनकर के भी महिलाएं जो हैं वो प्रशासन को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी संवेदनशीलता से जो है चला रही हैं। बहुत सी महिलाएं जो हैं, ऐसा नहीं है, चाहे बीडीओ है, सीएमओ है, इन अधिकारियों के नाते भी ग्रामीण के क्षेत्रों में भी जो महिलाएं हैं, एजुकेशन में भी, स्वास्थ्य में भी, या फिर स्वच्छता की बात की जाए, चाहे वो बीएमओ बन करके या सीएमओ बन के भी बहुत से सराहनीय कार्य कर रही हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं और हम लोगों को उन चीज़ों के लिए हम लोगों को भी अवेयर करती हैं। तो जब-जब महिलाओं को अवसर मिला है, शिक्षा मिली है या विश्वास मिला है, तो वो अपने सपनों को तो पूरा करती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है, महिलाएं ये साबित कर रही हैं और कर दिया है कि अगर हमें मौका मिलेगा, तो हम आसमान को भी छुएंगी और हम अंतरिक्ष तक पहुंचेंगी, जो कि हम एग्जाम्पल के साथ बात भी कर रहे थे। अच्छा, कई बार हम बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि ये बात भी सही है कि महिलाओं ने प्रगति भी कर ली है और हर क्षेत्र में कर ली है। लेकिन ये उतना भी
सही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जिस राह को वो अपनाती हैं, उस राह में जाना इतना आसान नहीं होता है। आज भी महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी-ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनके उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिल पाती है, और वो अंदर ही अंदर टूटती हैं। जैसे हम अगर बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जहाँ भी आज कोई भी जगह रहती है, कुछ भी कहें, लेकिन बराबर की हिस्सेदारी में जेंट्स के बराबर नहीं मिल पाती है। मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मैंने खुद अपना रिसर्च वर्क जो है वो हिमाचल में किया हुआ है, और इसमें मैंने फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या पे काम किया हुआ है। कहा तो जाता है कि देवी-देवताओं की भूमि है, लेकिन सच में ही जो रिजल्ट्स मेरे इस रिसर्च के आए थे, बड़े चौंका देने वाले रिजल्ट्स आए थे। जिन डिस्ट्रिक्ट्स को हम बड़े लिटरेट मानते हैं, चाहे हमीरपुर की बात है, मानते हैं, तो वहाँ पे ही ऐसे रिजल्ट्स आए थे कि सच में ही यहाँ जो है सन प्रेफ़रेंस दी जाती है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों को मिलते हैं। चलिए, हम जैसे भी एजुकेशन की कमी की बात जो है वो भी रहती है। कहीं न कहीं, चाहे हम कितने भी आज कॉन्फ्रेंस में भी जुड़े हैं, कहीं न कहीं ये बात रहती है। लड़का है तो हम सोचते हैं नहीं, इसको इंजीनियर बना और साइंस पढ़ाई जाए। लड़कियों की बात आती है तो हम बहुत बार ये चीज़ सोच लेते हैं कि बच्चे तू आर्ट्स रख ले। लेकिन आर्ट्स में भी लड़कियों ने आईएएस, एचएएस को छोड़ा नहीं है। जहाँ भी वो गई हैं उन्होंने अपना परचम लहराया ही लहराया है। लेकिन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो मैं थोड़ा-सा उसी पे आऊँगी। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की बात अगर हम करें, इस तरह की चुनौती भी सामने आती हैं। मैं बड़े ऐसा अजीब-सा लगता है, मैं खुद करियर पॉइंट में रही हूँ, और मैंने बहुत सी ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के भोरेंज के आस-पास की बहुत सी ऐसी घटनाएँ सुनी हैं, जिसके लिए हमारा भोरेंज जो है वो पीछे नहीं है। तो ऐसी बहुत सी घरेलू हिंसाएँ होती हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है, ये हमें माननी पड़ेगी, जो महिलाओं के आत्मसम्मान और जो हमारा आत्मविश्वास है, उसको चोट पहुँचाती हैं। इसके साथ-साथ कई बार कार्यस्थल कहीं भी रहता है, वर्किंग ज कहाँ भी रहता है, वहाँ भी असमानता रहती है। फिर वेतन की बात आती है, कई बार मैंने ये भी देखा है, ऐसे अपना ही एग्ज़ाम्पल दें हम लोग, तो हम खुद भी हार मान लेते हैं। हम ये कहते हैं, अच्छा, इतना वज़न ये मेरे से तो नहीं उठाया जाएगा, फलाने को बुला दो। थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में भी कम रहता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो रहता है, ये हमें इक्वालिटी या लेडीज़ को, वुमेन को नहीं मिलती हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं, बाधा बनती हैं। अच्छा, डिसीज़न मेकिंग की बात की जाए तो चाहे घर परिवार है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कई बार जो है ना, जो भी डिसीज़न महिलाएँ लेती हैं उसमें जो है मतलब अनसुनी सी कर देते हैं उसके लिए हुए डिसीज़न को। तो इन सभी चुनौतियों के मतलब देखना पड़ता है, इन सब चुनौतियों के बावजूद भी महिलाएं जो हैं, अगर अवसर मिले तो वो बदल रही हैं और पीछे नहीं हट रही हैं। वो शिक्षा को हथियार बना रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, और अगर जहां हो तो अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठा रही हैं। यही तो है समाज को बदलने का तरीका, और यही है रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब ही ये हो गया कि जब गिरना है तो फिर उठना भी है, उठना है तो फिर संघर्ष भी करना पड़ेगा, और अगर संघर्ष करना है तो संघर्ष से एक सीख भी लेनी पड़ेगी, और जिससे जिससे जो है वो मुश्किलों का सामना करते हुए आगे भी बढ़ना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ-जहाँ महिलाओं को मजबूत बनाया गया है, जिस-जिस देश में, समाज में, वो परिवार, वो गाँव, वो शहर, वो देश अवश्य सशक्त हुआ है। और ये कोई भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अगर महिलाएँ जो हैं वो आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारा देश अवश्य विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। अगर हम बात करें नवाचार की, मैंने एक्चुअली ऐसे रखा था कि मैं थोड़ा-थोड़ा सभी पॉइंट्स को टच करूँगी। तो अगर नवाचार की बात करें, तो कई बार हम लोग नवाचार को ना, इनोवेशन को हम लोग ले लेते हैं कि नई टेक्नीक आ गई। खेतों में काम पहले बैलों से किया जाता था, अब हम फार्मर्स को थोड़ा ट्रैक्टर के माध्यम से या ऐसी मशीन्स आ गई, उनके माध्यम से सोचने लग जाते हैं। पर कायदे से जो है नवाचार, इनोवेशन जो है, इसे ना कहते हुए एक्चुअल में नवाचार का अर्थ होता है कि नई सोच, जो नया दृष्टिकोण है, और जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उनके तरीकों को नए तरीकों के माध्यम से जो है उनको सॉल्व करना। इस तरह से इनोवेशन, नवाचार जो है वो माना जाता है। तो अगर महिलाओं को नवाचार के साथ जोड़ा जाए, तो महिलाएँ हमेशा ही नवाचार की जननी रही हैं। घर परिवार को लेकर के
समाज तक महिलाओं ने अपनी सूझबूझ से ऐसे समाधान खोजे हैं जो जीवन को भी आसान बनाते हैं और उनके सपनों को भी साकार करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल छोटा सा ऐसे दिया जाए कि भी हमारे पापा भाई ऐसे खाना बनाते हैं किचन में तो सिर्फ उनको उसी टाइम की चिंता रहती है, लेकिन साथियों महिलाओं का ऐसा रहता है कि उस भोजन को अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो कई बार दोपहर को या शाम तक कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है तो उसे भी हमें है ना सम्मान देना होता है, भोजन करवाना होता है, तो उन्हें ये भी देखना होता है कि कैसे इस भोजन को सही तरीके से रखा जाए। ठीक वाटर की बात करें अगर थोड़ा साइंटिफिकली देखा जाए तो चाहे वो औषधियों की बात है या कोई घरेलू छोटी छोटी संसाधनों की बात है, इन सब का कैसे उपयोग करना है, कैसे सदुपयोग करना है, इन सब चीजों को महिलाएं जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है देख रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आज ग्रामीण भारत की महिलाएं नवाचार के जीवंत मिसाल बनती जा रही हैं। चाहे देखो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें लेडीज जो हैं वोमेन जो हैं वो सोलर लैंप्स बना रही हैं, जैविक खाद का तैयार कर रही हैं, और तो और जहाँ पे जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, देहरा कैंपस के आसपास रहती हूँ, तो देहरा कैंपस के आसपास के हमने 5 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने खुद उनमें स्वयं सहायता समूह खोले हुए हैं और वहां पे बड़ी हैरानगी की बात इतने छोटे छोटे आइडियाज उन्होंने दिए, छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमने ट्रेनिंग्स करवाई। आप मानोगे यहाँ एलोवेरा से सोप बनाया जा रहा है, त्रिफला बनाया जा रहा है, ऐसी चीजें जिनका कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग, उन चीजों को लेकर के जो है महिलाएं तेजी से उद्यमिता भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। इको फ्रेंडली उत्पाद जो है वो तैयार कर रही हैं, जो कपड़ा वेस्ट हो जाता था उसका थैले बना रही हैं, प्लास्टिक का रीयूज रीड्यूस इन सब चीजों को रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को भी नया विकल्प दे रही है। और पर्यावरण की बात को देखें तो पर्यावरण के लिए तो जब चीजें आएंगी तो पर्यावरण तो ऑटोमेटिकली अपने आप सस्टेन होगा। तो आज की जो भी महिलाएं हैं जो वो समस्याओं से घबराती नहीं है। अब कई बार पीछे से ऐसे भी मैसेज आता है, नहीं नहीं मैडम बोल तो रही है लेकिन देखो कुछ एक महिलाएं तो रील बनाने में ही वो भी सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। हाँ, वे ऑफ थॉट है, वो किस तरह से करती हैं काम या किस तरह की रील्स बना रही हैं ना, लेकिन फिर भी वो अपने अजीब अलग अलग इनोवेटिव आइडिया जो हैं उन कंसेप्ट्स के माध्यम से चाहे सोशल चाहे मीडिया के माध्यम से जो है अपने आप को मजबूत बना रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसे हम चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वनों की कटाई जो कि होती जा रही है उनकी बात करें, या फिर संकट हो गया उसकी बात करें, या फिर पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो ये हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी बन गई है। साथियों, अगर हमने इन चीजों के लिए अगर क्योंकि हम पीढ़ी का भी एक दायित्व बनता है, अगर हम लोगों ने कोई खास कदम नहीं उठाए इन चीजों से सॉल्व करने के लिए, तो ये जो हमारे पीछे युवा पीढ़ी बैठी है ये हमें और आने वाली युवा पीढ़ी जो को कभी हमें माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लोगों को सुनना, उनके विचार एक छत के नीचे जो हम लोग जब सुनते हैं, तो हम लोगों को इस तरह की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी एक मैसेज जाता है युवा पीढ़ी को, नहीं फोन छोड़ करके हमें कुछ सुनना है, हमें कुछ करना है जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जो भी बात है, लेकिन हम लोग अगर महिलाओं को पर्यावरण के साथ जोड़ें तो एक हम लोग एंशिएंट टाइम से ही जब हम सुनते थे, पढ़ते थे, हड़प्पा संस्कृति की बात जब करते थे तब भी हम लोग ये बोलते थे कि जो पुरुष रहता है वो कमाने के लिए या कच्चा मांस लाने के लिए या शिकार करने के लिए बाहर जाता है और महिलाएं जो हैं वो घर पर रहती हैं। लेकिन हमने साथ में एक वाक्य भी पढ़ा हुआ है, एक सेंटेंस साथ में पढ़ते थे कि वो नेचर से मतलब अपनी चाहे सुंदरता है, चाहे घर को सुंदर बनाना, ये सब काम जो थे वो महिलाएं जो हैं वो प्रकृति से करती थी। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि महिलाएं प्रकृति के बहुत करीब रहती हैं, ये हम पहले से ही प्राचीन काल से ही ये चीज मानते हैं। तो पानी की कीमत क्या है या मिट्टी की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या रोल है, ये सब चीजें भी इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो पर्यावरण को लेकर के है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है और वो अपना पूरा रोल भी निभाती हैं। चाहे एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है,
चिपको आंदोलन की बात होती है, तो जब चिपको आंदोलन कभी हम हिस्ट्री में पढ़ते थे और अभी हम पढ़ाते भी हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा, इसे कोई नहीं भूल सकता है साथियों। इसमें जो उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं थी, उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए कैसे कभी लिपट कर, कभी चिपक कर जो है उन पेड़ों को कटने से बचाया था। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और ये हमें बताते हैं और संदेश भी देते हैं कि प्रकृति की रक्षा केवल नीतियों से नहीं बनती है, केवल इस तरह के इनोवेटिव से नहीं बनती है। प्रकृति की रक्षा के लिए हमें संवेदनशील भी बनना पड़ता है और साहसी भी बनना पड़ता है। तो ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि जब महिलाएं आगे आती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण जो है एक आंदोलन भी बन जाता है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये तभी संभव हो पाएगी जब महिलाओं को निर्णय और संरक्षण की प्रक्रिया में बराबरी का स्थान मिलेगा। यदि हम एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, तो हम महिलाओं को हमारे द्वारा जो है वो शिक्षा, इक्वलिटी, समानता का अधिकार और फिर निर्णय लेने की शक्ति जो है वो हमें उन्हें देनी पड़ेगी। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज मजबूत होगा और पर्यावरण तो फिर ऑटोमेटिक ही, जितना भी हमने अभी सुना समझा, ऑटोमेटिक ही वो डेवलप होगा। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तब उन्हें शिक्षा, अवसर और विश्वास मिलता है और वो ऐसे-ऐसे समाधान लेकर के आती हैं कि जो आज की समस्या नहीं सुलझाते, पर आने वाली बहुत सी पीढ़ियों के बारे में वो सुरक्षित कर जाती हैं और टिकाऊ भी बन जाती हैं। परिवार हुआ, समाज हुआ, प्रकृति हुई, इन तीनों का बैलेंस होना हमारी सृष्टि के लिए हम बहुत ज़रूरी रहता है। इसके द्वारा ही हम लोग प्रभावित भी होते हैं और लंबे समय तक हम इसे सुरक्षित भी मानते हैं। अब चाहे हम लोग ग्राम की बात करें, तो जैसे सोलर चूल्हे हैं, उनका उपयोग हो रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो लकड़ी की खपत थी वो कम हो रही है, धुआँ भी कम हो रहा है और उनका स्वास्थ्य, जो कि बहुत सी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को आती थी, वो भी कम होती जा रही हैं। अच्छा, कई स्थानों पर जो हैं कुछ ऐसी स्कीम्स आ गई हैं, उनके माध्यम से जो लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, जो पानी का भी संचयन कर रही हैं, पानी को बचा रही हैं और ये इम्पोर्टेंस दे रही हैं कि जल संकट आना नहीं चाहिए, तो हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैविक खेती की बात है या फिर और तो और, जैसे गाँवों में भी बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे कचरा जो है उससे खाद बनाना, फिर रिसाइक्लिंग की बात करना। ये सब चीज़ें जो है हमारा दायित्व भी बनता है और हम लोग ये भी मानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में ही सतत डेवलपमेंट जो है वो हमारा भविष्य दिखा रही है। पर इसमें मेन रोल जो रहता है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो मेन रोल रहता है, मेन कुंजी रहती है, वो रहती है एजुकेशन। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, हमारा परिवार जो है वो एकत्रित नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को महिलाओं को शिक्षित भी करना है, ताकि पूरा परिवार जो है शिक्षित हो। अच्छा, पूरा परिवार जब शिक्षित होता है तो गांव शिक्षित होता है, गांव शिक्षित होता है तो फिर समाज भी जागरूक बनता है। तो हम लोगों को ये एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी या वैसे भी हम लोगों को हमेशा ये मैसेज अपने आप में रखना चाहिए कि लड़कियों को एजुकेशन जरूर देनी है। चाहे वो डिजिटल एजुकेशन की बात है, ऐसी-ऐसी जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो भी देना चाहिए, डिजिटल साक्षरता की बातचीत हम लोगों को करनी चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है? तो सरकार की बहुत सी नीतियाँ रहती हैं जो महिलाओं और समाज को सशक्तिकरण करने के लिए जो है महत्वपूर्ण योजनाएँ जो हैं बनाती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने 24-25 के उसमें जो एक स्पेशल कॉल किया था फंडिंग के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन पे जो है प्रोजेक्ट्स लिखे जाएं और नो डाउट उन्होंने दे प्रोवाइड द गुड फंड्स। फॉर एग्जांपल 15 लाख टू 30 लाख तक उन्होंने जो है वो फंड दिया। और मैंने थोड़ा-सा ऐसे हल्का-सा सर्वे किया, तो जो महिलाओं को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, उनमें बहुत से प्रोजेक्ट्स उनके पास आए। बाय चांस मैंने भी प्रोजेक्ट अप्लाई किया था और मुझे भी प्रोजेक्ट मिला, तो मेरा प्रोजेक्ट इसी पे था। जैसे ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसमें बच्चियों को इक्वल एजुकेशन और सम्मान की बात की जाती है। बाय चांस मैंने डॉक्टर मैडम आशा जी को भी यहाँ पे उस टाइम लेक्चर के लिए बुलाया था और उन्होंने भी बहुत अच्छे से विचार एक कॉन्फ्रेंस में, एक वर्कशॉप में हमारे साथ साझा किए थे। कहने की ये बात है कि सरकार ने नीतियाँ तो बनाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना में जो है महिलाओं को जो
स्वच्छता को देखते हुए जो है वो ईंधन जो मतलब उनकी अपनी हेल्थ को देखते हुए जो है उज्ज्वला योजना बनाई थी। स्वयं सहायता समूह की तो हम बात कर ही रहे हैं कि इनसे महिलाएँ जो है आत्मनिर्भर भी बनती हैं। स्टार्टअप इंडिया में जो है वो भी देखा जाए तो उनके छोटे-छोटे आइडियाज़ को स्टार्टअप इंडिया में भी जगह दी गई है। ऐसी बहुत सी योजनाएँ बना दी गई हैं, लेकिन योजनाएँ बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। योजनाओं से ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारी सोच में बदलाव, समाज की सोच में बदलाव। जब तक समाज बेटी को बोझ नहीं बल्कि शक्ति नहीं मानेगा, जब तक महिलाओं को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा और जब तक हम सब मिलकर बदलाव की ज़िम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक जो है हमारे देश का असली विकास संभव नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा याद रखना है कि जब समाज बदलेगा तब असली विकास होगा। तो ये सब बातें जो हैं हम लोगों को जो है महिलाओं के लिए सोचने पे मजबूर करती हैं और हम लोगों को सोचना भी चाहिए। अच्छा हम लोग भी युवा हैं लेकिन हमारे साथ जो हमारे साथी जो हमारे भविष्य हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएँ जो हैं उनको हमेशा सम्मान देना होगा। उनके विचारों को भी महत्व देना होगा। तभी तो फिर पर्यावरण के प्रति हमारी ज़िम्मेवारी बनती है। तो छोटे-छोटे कदम जो हैं हम लोगों को छोटे-छोटे स्टेपिंग करते रहना चाहिए। चाहे पानी की बात है, पेड़ों को लगाने की बात है या फिर प्लास्टिक की बात है या फिर जो लोकल फॉर वोकल का कांसेप्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उस कांसेप्ट्स को देखना क्योंकि स्थानीय जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको ही अपनाना है और उन्हीं को ही यूज़ करना है। इसी से ही तो हम लोग लाएँगे बड़ा परिवर्तन, इसी से तो हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा। तो इन्हीं बातों को देखते हुए ऐसे कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो मैं साझा करना चाह रही थी। लेकिन थोड़ा-सा मुझे भी थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि ऑनलाइन नहीं मुझे खुद ऑफ़लाइन आना था लेकिन इम्पोर्टेंस यहाँ पे एग्ज़ाम की वज़ह से मैं नहीं आ पाई। और इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो देखने को, सुनने को, समझने को मिला और बहुत से बुद्धिजीवियों ने पक्का यहाँ पे विचार भी अपने साझा किए। बीच-बीच में मैंने भी ऑनलाइन कुछ-कुछ चीज़ें सुनी हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। तो मैं अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब महिलाएँ सशक्त होंगी, जब नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, तभी सच्चा और स्थायी विकास हमारे भारत का संभव हो पाएगा। कई बार हम लोग एक चीज़ मुझे याद आ गई बात करते-करते, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि डेवलपमेंट को हम मान लेते हैं कि अच्छा ये छोटा घर था, पुराने घर थे, अब बड़े घर बन गए, इन्होंने बहुत अच्छा घर बना लिया। हम इसी को ही हम लोग ना विकास मान लेते हैं, परंतु सच में कहा जाए तो विकास ये नहीं है। विकास जो है वो हमारा है कि विकास तब होता है जब हम अपनी सोच को बदलें, संवेदना को समझें और अपनी ज़िम्मेवारियों को समझें। ये ज़िम्मेवारी हम सबकी रहती है। तो क्यों ना आज हम इस छत के नीचे चाहे मैं ऑनलाइन जुड़ी हूँ, इस माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएँगे, नई और सकारात्मक सोच भी अपनाएँगे और धरती माँ की रक्षा करेंगे और क्यों ना हम भारत को विश्व गुरु बनाने में महिलाओं का जो योगदान रहता है, उसे हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः गवर्नमेंट कॉलेज भोरन जिसमें कि ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वही इसकी जो पूरी टीम है और रिस्पेक्टेड आदरणीय जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, इन सबको मैं एक बार फिर से साधुवाद देते हुए, पूरी टीम को साधुवाद देते हुए और सबका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे सुना और अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। तो क्यों ना हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एक समृद्ध और सुंदर भविष्य दे पाएँ ताकि इस कॉन्फ्रेंस का भी कोई अच्छा-सा एक कंपाइल सा रिपोर्ट बने और क्यों ना हम उस कंपाइल रिपोर्ट को एक पॉलिसी के रूप में फ्रेम करके अपनी भावनाओं को जो भी यहाँ पे एकत्रित हुई हैं नेशनल, इंटरनेशनल, क्यों ना उन सबको हम एक पेज में उतार के भारत सरकार के सामने रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पर कहीं न कहीं खरे उतरे होंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हेलो। हाँ, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। जब मैं रिसर्च में इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखती हूँ, जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, कन्या भ्रूण हत्या की बात जब चल रही थी, सन प्रेफरेंस की बात चल रही थी, इवन लास्ट राइट्स जो रहते हैं, उनके बारे में जो भी आइडियाज़ रहते हैं, तो people think that कि only son are responsible or son have the positive response for the last rites at the time of death ceremony and all। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा है कि जब तक मानसिकता अपने आप नहीं बदलेगी वोमेन की अपने लिए अपनी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, तब तक जो है हमारे कल्चर रिलीजन्स या कल्चर जो भी सोसाइटी की इम्पोर्टेंस रहती है, उन सबको देखते हुए हम लोगों ने ये चीज देखी है कि हमें या महिलाओं को खुद सशक्त होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, अपनी इम्पोर्टेंस को अपने आप देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप से ये जो भी कल्चर राइट्स हैं, इन सबको देखना है, इन सब के बारे में सोचना है। तभी जो है हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा और महिलाओं के लिए जो एक नेगेटिव सोच रहती है, उसको बदलना पड़ेगा। जी। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Very nice talk about the चीज़ की, महिला ही महिलाओं की। मैं अगर पता नहीं टाइम का शॉर्टेज ना हो, अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मैं खुद ऊना में एक जब अपना पीएचडी का सर्वे कर रही थी, तो उस टाइम मुझे किसी जिस जो मेरा एरिया सेलेक्ट हुआ था, वहाँ से एक वुमन मुझसे पूछती है कि, "किस लिए घूम रही है तू यहाँ पे?" मैंने कहा, "ऐसे-ऐसे मैं अपना प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क कर रही हूँ।" उनका ये कहना हो जाता है कि उसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैंने कहा ऐसा सुना है कि ऊना में लड़कियाँ बहुत कम हैं और ऊना की लड़कियाँ जो हैं मोस्टली, क्योंकि पंजाब एक ऐसा एरिया है जहाँ खुद पैदा नहीं की जाती हैं और वो डॉटर किलर्स की स्टेट है, पता है? यूनियन टेरिटरी। और पंजाब जो है वो 817 लड़कियों के साथ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद तो पंजाब अपना फॉरेन अब्रॉड चले जाते हैं, लेकिन हिमाचल का जो ऊना जिला है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है और वहां से वो लड़कियों की शादी कर लेते हैं पंजाब में। तो वहाँ पे ऐसा कल्चर बन गया कि हिमाचल से लड़कियाँ ले आएँ। बच्चियाँ जो हैं हिमाचल क्यों? क्योंकि तो बच्चों को भी थोड़ा-सा या पेरेंट्स भी ये देख लेते हैं कि अच्छा फ़ॉरेन में रहता है, चाहे वो वहाँ पे कुछ भी कर रहा हो। रहता है, क्यों ना हम इसकी शादी वहाँ पे कर दें और ऐसे करके शादी कर देते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है, जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो वो कहती कि अच्छा तू ये टॉपिक पे काम कर रही है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मैं इस टॉपिक पे काम कर रही हूँ। मैंने सुना है कि ऊना में जो है वो लड़कियाँ जी वहाँ पे डीसी हुआ करते थे, अभिषेक जैन।
तो मैंने कहा ऐसा सुना है, तो उनका ये कहना था तेरे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरी एक बेटी है। कोई फ़ायदा नहीं है तेरा इधर-उधर घूमने का, जब तक तेरे पास बेटा नहीं आया ना, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के पढ़ने का, क्यों पढ़ रही है तू? तो ऐसी सोच को बदलने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। उसने यहाँ तक भी मुझे कह दिया कि अगले साल तक अभी अगर आपने मतलब ये पढ़ाई करनी है खत्म होने तक, आपको नौकरी नहीं मिलती, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? आपके पास बच्चा नहीं, लड़का नहीं है, किस लिए आप लोग पढ़ रहे हैं? तो ऐसी विचारधारा की महिलाओं का सामना भी किया है, लेकिन हमें अपने आप से अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो युवा पीढ़ी हम लोग हैं, हम वाली पीढ़ी है, आगे वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना है। बहुत सा चेंजेस आया है, इसीलिए तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं। इसी तरह से भारत सरकार ने ऐसी स्कीम्स बताई हुई हैं, जिनके माध्यम से है, जो आने वाली पीढ़ी ये चीज़ों के बारे में सोच रही है। तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं, वो जाने चाहिए। जी। यस मैम, इट्स ट्रू कि जो हमारी जनरेशन है, जो हम 45 प्लस में आए हुए हैं, हम सब ने ये चीजें फेस की हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दैट टाइम की फीमेल्स को कि +2 हो गया तो दैट इज गुड कि इसकी शादी कर दी जाए, क्या जरूरत है, लड़का नहीं मिलेगा। दैट इज कंसेप्ट कि पंजाब में तो वैसे ही आई एम बिलोंग फ्रॉम द पंजाब, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस एरिया दैट टाइम कि जब मैं भी मैम इट्स माय ओन एग्जांपल कि व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय +2 तो माई दादी कह रही है कि इसकी शादी कर दो, बस ज्यादा पढ़ाओगे तो वो लड़का नहीं मिलेगा। तो मैम बट एट प्रेजेंट सिनेरियो वी कैन से दैट कि अब बदल चुका है समय, तो लड़कियां बराबर हैं तो कर रही हैं। तो मेन ये है कि हम अगर जेंडर सेंसिटिविटीज को भी देखें तो वो भी हम कह सकते हैं कि लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं। पर जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, वो चाहे वो जेंडर है, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे किसी और कंसेप्ट को लेके, तो इट इज नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल टॉक मैम, आई रियली अप्रिशिएट मैम टू यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर बहुत-बहुत थैंक यू। कैन आई लीव द मीटिंग? कैन आई लीव द मीटिंग? ओके। Resilient women, innovative solutions,
sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women, innovative solutions, sustainable environment, resilient women.